Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hi friends, come to the next part of Western schools of philosophy, and here we discuss another concept of philosophical prospect which have a great importance and influence on our educational structure and process. Sei concept ko ame jiba, that is the concept of pragmatism and education. So here we discuss the concept of pragmatism and education. So before starting, there was a very important and also interesting fact behind that philosophical concept, and that is when Columbus discovered America, and after his discovery, many people from Europe migrate to America. They settled in the newfound land because that land is full of different type of resources. Okay, so due to these availability of these resources, natural resources, many people from the Europe, they travel from the Europe to America for their livelihood. तो आम ये फिगर रे मु गोटे देखिया पे चेष्टा करछि जे जेतेबेले कोलंबस डिस्कवर अमेरिका को करिसंती सेतेबेले यूरोप रु डिफरेंट पार्ट रु कोन हैला ना डिफरेंट लोक माइग्रेट हेले कोठी की जेहेतु रिसोर्स रो अवेलेबिलिटी अछि तो सेत में माइग्रेट हे की यूरोप रु अमेरिका आसिले सिटी रहिबा पई बट एक्चुअली प्रॉब्लम कोन हैला ना जेतेबेले आमे गोटे नुवा जो जगह रे आमे पहुंचिलु आ बहुत डिफरेंट टाइप रो लोक आसिक सेठी रहिले तो तांको भितर निश्चित भाव गोटे प्रॉब्लम क्रिएट होबार संभावना रहिला ठीक अछि हम प्रैक्टिकली गोटे कांसेप्ट को बुझीबा तापर आमे ए फिलोसॉफी को गले भलो भाव रे तमे ताको एनालिसिस करि परिबो ठीक अछि तो फॉर एग्जांपल मु गोटे रूम टे नेली ओके तो ए रूम रे मु डिफरेंट लोक डिफरेंट कैटेगरी लोक को मु एठी आनी की रखिली ओके तो जेहेतु से रूम को मु क्लोज कर देली किछि समय पर निश्चित भाव में पाइबा जे दीज इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम एंड दे क्रिएट डिफरेंट डिस्टर्बेंस विथ ईच अदर्स काहे की जेतेबेले गोटे सिंगल फ्रेम भितरे डिफरेंट कैटेगरी लोक रहिले सेतेबेले प्रॉब्लम कोन क्रिएट हला ना डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन थिंकिंग ओन फिलोसॉफिकल प्रोसेस आ समस्त को फिलोसॉफिकल प्रोसेस को नेई की बस तांको रिप्रेजेंटेशन को से माने ठीक बोली मानिले तो ये जो रीजन रु कौन है ना गोटे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो यही गोटे रूम भितर जमी क्रिएट है सेम टाइप रो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कौन तैयारी है ना यूएसए रे तैयारी है जोटा कि आज का डेट रे यूएसए कहउचंती से जो वास्ट लैंड अमेरिका से जगह रे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तैयारी है सो एट दैट टाइम मेनी आइडियलिस्टिक फिलोसोफर्स दे ट्राइज टू सॉल्व द इंटरनल प्रॉब्लम बाय देयर फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यूज बट एक्चुअली जदि प्रैक्टिकली सिचुएशन ले कोन हला ना सब आइडियलिस्टिक फिलोसोफर सेठी थिले तो सब आइडियलिस्टिक फिलोसोफर जेतेबेले से निज तांको ओन फिलोसॉफिकल पर्सपेक्ट को देले सेतेबेले कॉन्फ्लिक्ट जो सॉल्व होबा जगह रे आहुरी प्रॉब्लम बढ़ी गला ओके सो एई टाइम रे आउ दी जण बा आउ तीन जण फिलोसोफर थिले सेई जगह रे दे शुड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इन ए अदर मेथड केमिति सॉल्व कले हमें देखिबा आ से फिलोसोफर किए ना फर्स्ट वन विलियम जेम्स सेकंड वन जॉन ड्यूई एंड सर चार्ल्स एस पाइस so these three philosopher and also they are well known poet at that time तो यही तीन जनकर गोटे ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहिला टू रिसॉल्व द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट की जो विभिन्न कैटेगरी लोक आसीथिला और तांको आइडियलिस्टिक पर्सपेक्ट रे से निजक निजे आइडेंटिफाई करिया कथा चिंता करथुले तो सेही कॉन्फ्लिक्ट रु बाहर करिया पई एही तीन जण लोक जे की बेसिकली तांकर इन्फ्लुएंस रहिला आ ए तीन जनक भितर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल की थिले ना जॉन ड्यूई आ ए नाटा प्राय आमे आगरु सुनिचंती या परे बहुत जगह रे आमे सुनिया पई पाइबा so that individual has a great influence on that philosophy तो यांकर प्रोसेस कौन रहिला फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्ट कौन रहिला जो आमे गुटे रूम कथा कहितलु जो गुटे रूम भितर आमे डिफरेंट कैटेगरी लोकन को रखिबु
केतेबेले कॉन्फ्लिक्ट हबो जेतेबेले सांको पाखरे एनफ टाइम रहिबो फ्री टाइम रहिबो तो सही समय रे ही हमें पाइबा सेमान को भितर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होउची बट इफ वी असाइन different टास्क टू different individuals okay and after assigning these tasks we found these individuals are engaged in doing these works तो जेतेबेले हमें गोटे पर्टिकुलर काम रे एंगेज हेकी रहिलु हमें आम माइंड डिस्टर्ब होबार नहीं कि आम अदर को काकू डिस्टर्ब करिवार आमको पड़िबो नहीं तो सेम फिलोसॉफिकल कांसेप्ट को ये तीन जण नहीं कि आसिले दे ट्राइज टू प्रोवाइड सम ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क टू द different इंडिविजुअल्स एंड एंगेज देम तो तांको एंगेज करिक रखिले कॉन्फ्लिक्ट रो कथा तांको माइंड को आसीबोनी एई प्रोसेस रे से गुटे नुवा प्रकार फिलोसॉफिकल कांसेप्ट को नहीं कि आसिले जहार ना हला कोन ना pragmatism okay so the word pragmatism derived from the Latin word pragma okay and sometimes we also found the word pragmatico okay तो ये भले दीटा वर्ड रु pragmatism आसी बोली हमें कंसीडर करू and the meaning of both the word is action or to work तो जेहेतु एठी हमें वर्किंग बा गोटे किछि काम देई कि लोकन को एंगेज करेलु तांको भितर कॉन्फ्लिक्ट न आसीबा पई जो हमरो बा तांकर जो चेष्टा थिला से कोन करथुले ना वर्क असाइन करथुले तो सेही कांसेप्ट रु ए फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव जो आसीथिला बोली कंसीडर करा जाय ओके सो pragmatism रो बेसिक कांसेप्ट को एबे डिस्कशन करिबा सो pragmatism इज अ फिलोसॉफी दैट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन लाइफ बिकॉज़ द रूट ऑफ द फिलोसॉफी is the American land. So generally the philosophical prospect are reflected from the American life. And pragmatism has also been called instrumentalisms and experimentalism. Okay, jehetu work based principle re philosophy ta rahila due to that it is also otherly known as instrumentalism and experimentalism. Okay. And the word pragmatism is the derived from the Latin word mu kohidili Greek word pragma which means work or action done action or work done okay so the meaning of the word is this according to William James pragmatism is a temper of mind and attitude तो हम पर्टिकुलर गोटे स्टेट रे जो आम माइंड रे जो टेम्पर थाए जो एटीट्यूड थाए सेटा आमे कोन करिवा कोन नाही डिसाइड करे ओके जेहेतु आमे प्रथम डिस्कशन करछन दैट फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द working principle due to that considered as a temper of mind and attitude and it is also theory of the nature of ideas and truth and finally is the theory about the reality okay so that theory is basically based on the reality the real concept which we found in our surrounding and the things which are used in our real life processes तो सही कॉन्सेप्ट सही बेस को ए फिलोसॉफी नहीं की तैयारी हेइथिला एंड अकॉर्डिंग टू रेड pragmatism makes activity engagement commitment and encounter to contract them okay तो जेहेतु आमे डिस्कशन कलु जे ताको एक्टिविटी बेस्ड रे आमे एंगेज करेइबू ताको एंगेजमेंट करेइबू कमिटमेंट करेइबा आमे एंड आल्सो एनकाउंटर टू द कॉन्ट्रैक्ट देम तो ताको गोटे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट दिया जिवो एई काम को एई असाइन बा एई काम को असाइन करा जिवो एई टाइम भितरे एई टाइम फ्रेम भितरे एई काम कंप्लीट हबो तो एई बळे तळे एंगेज करी इंडिविजुअल को रखिबा सो आफ्टर एंगेजिंग different इंडिविजुअल वी जनरली फाउंड पीस बा वी जनरली थिंक पीस वाज एस्टैब्लिश्ड बा जो कॉन्फ्लिक्ट होतला से कॉन्फ्लिक्ट आउ हबो नाही अकॉर्डिंग टू रस्क pragmatism is merely a stage of the development of new idealism तो ए कांसेप्ट को गोटे न्यू आइडियलिज्म आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रे जदी हमें देखंती दैट इज वन टाइप ऑफ न्यू आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी एंड आइडियलिज्म दैट विल डू फुल जस्टिस टू रियलिटी देन reconcile and practical and spiritual values and result as a culture which is flower of efficiency and nor the negations of it okay so here in this process of philosophy we generally try to develop the efficiency level of the individuals the thing which is already present within the individuals तो ए आइडियाज को नहीं कि जेहेतु ए प्रिंसिपल बा फिलोसॉफी नहीं थिले तयारी हेइतिला तो रस्क को मतरे
जे that is new type of idealistic philosophy. Okay, so these are the basic concept of pragmatism जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे आमे इंट्रोडक्शन पार्ट रे एती कथा को लिखि परिबा. देन सम चीफ प्रिंसिपल्स जोटा कि pragmatism को डिफाइन करिवारे हमको हेल्पफुल होबो बा बुझिबारे हमको हेल्पफुल होबो. तो these are the basic principles and chief assertions of pragmatism. कौन कौन देखिबा. The first one is changing natural and eternal values. Okay, that means जेमिति pragmatism बा idealism philosophy रे थिला, the values are fixed and eternal. Okay, that should not be changed time to time. But pragmatism रे concept रे आसिला, the values are changing in nature, जोटा कि हम eternal कहउचंती, से eternal values are also changed in a time period. Okay, so according to pragmatism, truth is made by man. According to Dewey, truth is made just as a health, wealth and strength are made in course of experiences. Okay, तो जो आम एक्सपीरियंसेस रु जहाँ जहाँ गेन करूँ से कॉन्सेप्ट रु ही आम ट्रूथनेस को फाइंड आउट करवा बोली pragmatism ताको डिफाइन कला. एंड इन द चेंजिंग वर्ल्ड नथिंग इज ट्रू और गुड फॉरएवर. ओके, व्हाट वाज गुड यस्टरडे मे चीज टू बी गुड टुडे. तो आम जोटा माने आसंता काली बा गला काली जोटा ठीक अछि बा ट्रूथ अछि जे आगो को सेही जिंसटा ट्रूथ रहिबो तार किछि वैल्यू नाही. And it denies the permanent values. Man has to create his own values. So human beings are the creator of their own values. तो आमे situationally कोन टाइम रे आमे कोन प्रकार value को शो करिवा, that is totally depend on the individuals or human being. So values are not fixed. Okay, so that is the first principle of pragmatism or pragmatist philosophy. Then second one is reality still in making. Reality still in making. रियलिटी जो रियल कॉन्सेप्ट हमें कहउचंदी, दैट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस और मेकिंग प्रोसेस. केबे तारो गुटे जो टॉप बा गुटे हमें कहि परिबा जो गुटे लास्ट पॉइंट आसीबो नाही, जते टाइम बढ़ी बढ़ी जीवो बा गडी गडी जीवो, रियलिटी रो कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट हेई जीवो. फॉर pragmatist the reality is still in the making. It is to be made and created and remolded to suit our purpose of desires. Okay, तो जो जिंसटा गला काली जोटा रियल थिला बा जो सिचुएशन रे से जिंसटा रियल थिला, आसंता काली जे से सिचुएशन बा अलगा सिचुएशन आसिले से सिचुएशन रे सेही रियलिटी रहिबो, से कथा हमें डिफाइन करि परिबा नाही. सो रियलिटी मस्ट बी चेंज्ड ड्यू टाइम. द यूनिवर्स इज ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ चेंज एंड फ्लक्स. सो द यूनिवर्स जो कथाटा हमें देखुचंती यूनिवर्सल कांसेप्ट बा जो यूनिवर्सटा सेटा ऑलवेज चेंजिंग इन द जो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रे रहिबो, आउ सेटा फ्लक्स गुटा हम बोली कहि परिबा. Then the another principle of pragmatism by pragmatist philosophy, that is faith in experimentation. तो आमे जो आम लाइफ रे जो जो एक्सपेरिमेंटेशन आमे करूचंती विभिन्न प्रोसेस रे, आमे जो लिवलीहुड प्रोसेस रे, दैट इज द रियलिटी और रियल कांसेप्ट आ सेहिथिरे ही ट्रूथनेस अछि बोली आमे कहंती. सो हियर वी फेथ इन एक्सपेरिमेंटेशंस. नथिंग इज गुड और बैड बिफोर इट इज टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट. ओनली दैट things is good and beautiful which emerges out successful after experimentations. Okay, so जो concept ता आज आम पाखरे अछि, जो जिंसटा concept बा जो content रे आमे discussion करूचंती जे कोनोसी content रे हो, तो first we experiment on this concept and then we find the logical concept बा logics behind it or reasoning behind it. तापरे जे कि से concept ता truth और real बोली आमे consider करंती. So here this process is considered as experimentation process and also it deals with faith in experimentation. Then the fourth one is faith in the present and immediate future. Faith in the present and immediate future. Okay, तो आमे जोठी रहुचंती, the present situation is very important for us and also we only think about our immediate future, not for a long period of time. कहीं ना जो चेंजिंग प्रोसेस रे आमे अछंती, जो चेंजिंग सोसाइटी, जो चेंजिंग नेचर रे अछंती, सेटा गोटे टाइम पर चेंज ही जीवो, तो से प्रोसेस रे कोन डिफरेंट कांसेप्ट आसीबो. सो pragmatism philosophy only believe on the present thing and also the immediate future. So past of the pragmatist is dead and gone. Okay, pragmatist remains confined to the immediate problems and look forward the immediate future. Values are created by activity and experiences. तो जो values गुड़ा हमें realize करूचंती, these values are created by the individuals through different activities and also these values are gained
in different experiences. So nothing is eternal or static, everything is flexible in nature, and time to time we found there are different type of changes. Then come to the next part of principles, that is development of personality. So personality is a very important quality for the individuals, because these qualities helps individual to live in our society in a different manner. So personality development is possible only because of interactions with the environment. तो आम एनवायरनमेंट सहित जतबेले प्रॉपर इंटरैक्शंस हबो से प्रॉपर इंटरैक्शंस रे ही हमरो प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हबो बोली हमें कहिबा. Man has the capacity to mold his environment according to his need, purpose and desire. तो जो एनवायरनमेंट कथाटा हमें कहउचंती जो चेंजेस बा मोल्ड होउची that is due to our need, purpose and desires. The next one is faith in flexibility. Faith in flexibility. Pragmatists believe that nothing is fixed and final in the world. Life is ever changing and self renewing process. Okay. So जो flexibility concept आमे अबे just discussion करथुले जे flexibility is the natural truth of everyone's life. Nothing is permanent or fixed. Time to time आम world रे सब जिंस change होबा आमे भी change होबा. So life is ever changing and self renewing process. So these are the basic principles of pragmatism. And एई जो 5-6 आमे principles define कले एई concept रु ही आमे pragmatism को बुझी परिबा. Okay. So तो आमे वर्तमान आसीबा जो important part of that philosophy, that is educational principle. तो आमे starting with aims of education. So pragmatism are opposed to any kind of fixed and static aim of education. They believe that values of life are not fixed, so we cannot fix the aim of education forever. Okay. So aims are discussed as under. तो को aim को आमे टिके discuss वर्तमान करिबा जेउति आमे जानि पालु जे not fixed किछि fixed नुए. एजुकेशन रो एम टा टाइम टू टाइम तार नीड, सोसाइटी रो नीड कोन अछि, एनवायरनमेंट रो नीड कोन अछि, इंडिविजुअल रो नीड कोन अछि, से सब कथा को देखि कि आमे हमर एम को चेंज करंती. सो व्हाट आर द बेसिक एम्स ऑफ एजुकेशन, लेट्स डिस्कस. तो क्रिएशन ऑफ वैल्यूज, दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, जोटा कि इमीडिएट वैल्यू ऊपर बेसिकली ये डिस्कशन कला. तो क्रिएशन ऑफ वैल्यूज आउ आमे याकू कहि परिबा इमीडिएट वैल्यू बोली भी. Pragmatists believe that tomorrow is another day with its own problems and with their own method of solutions. Okay. तो नुआ concept आसीबो, नुआ problems आसीबो आउ नुआ तार solution नुआ है कि आसीबो. So education should provide physical, intellectual, aesthetic, moral and religious value to the individuals. Values are created by activity and experiences. For example, मु डेटी एग्जांपल दबा पई चाहिबी. गुटे प्रथम केस गुटे केस अछि जो केस रे गुटे भिकारीटे भिक मागुची हमको, ठीक अछि. तो दैट इज आवर काइंडनेस टू प्रोवाइड सम बेगिंग. ओके, ताको किछि भिक्षा दबा, दैट इज आवर काइंडनेस, दैट इज वन टाइप ऑफ वैल्यू. सेकंड केस रे गुटे लोक हमको छुरीटे देखि कि किछि गुटे मागुची, से भी तो मागुची. फर्स्ट केस रे भी भिकारी मागुथला, सेकंड केस रे चोरटे भी मागुची. तो दीटा सारा केस रे दी जण मागुचंती. तो आमे काहाकू नोइंगली पैसा दउचंती आ काहाकू अननोइंगली पैसा दउचंती, दैट इज डिपेंड ऑन अस. तो सेही समय रे गोटे जगह रे हमर काइंडनेस वैल्यूज आसिला बेले आ गोटे जगह रे फियरनेस रो कांसेप्ट आसुची. तो डिफरेंट कांसेप्ट डिफरेंट सिचुएशन रे कंडीशन किंतु से मागुचंती से माने, किंतु हमर वैल्यूज रो कांसेप्ट चेंज हि जाउची. तो ए कांसेप्ट रे सी डिफाइन कले जे वैल्यूज आर क्रिएटेड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस. एक्टिविटी आर द मीडिया ऑफ द क्रिएशन ऑफ वैल्यूज. ओके. Then second aim of education according to pragmatism is, the main aim of education is to provide individuals he conditions for better and continuous growth. Better and continuous growth ପାଇଁ ଗୋଟେ individual ର development ପାଇଁ କିଏ help करे ନା education. Because as we know the learning process continues from our birth to death. माने जो single second of our life सब जगह ଆମେ କିଛି ना କିଛି learn करूचंती. Due to that education is a very important tool for the developmental process. Our maximum growth को जदि हम ensure करूचंती, we must need some sorts of good educational system and process. Then harmonious development. The aim of education is to direct the impulses, interest and the ability towards the satisfaction of the child and his environment. Okay. So
through education we always ensure, we always try to ensure the harmonious development of the individuals with the environment, with the society, with the individuality. समस्त को नहीं कि केमिति तार टोटल डेवलपमेंट हो, फुलेस्ट एक्सटेंट रो डेवलपमेंट हो, से कॉन्सेप्ट को एजुकेशन सब बड़े डिसाइड करे. So that is the third aim of education according to pragmatism. The next one is the social efficiency. So education should be produced socially efficient individuals. As we know, we are the social animals and we are special due to our society. जदि सोसाइटी हमको एग्जिस्ट न करि थांता, जदि सोसाइटी हमको गुटे आइडेंटिफिकेशन न देई थांता, तो आमर गुटे वैल्यूज, आमर गुटे ह्यूमन वैल्यू किछि ही नाही. तो विदाउट सोसाइटी देयर वाज नो एक्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी. सो हियर ड्यू टू दैट we must need to learn different type of social concepts and social phenomenon and develop the efficiency within the society. तो से जो efficiency रो development कहा थ्रू रे possible होबो ना through the education. Due to that it is considered as a fourth important aim of education. Then the fifth one is proper adjustment. Education should enable the human beings to be fairly adjusted in his existing environment. जो एनवायरमेंट रे आमे रहउचंती सेही एनवायरमेंट रे आमे केमिति फेयरली एडिक्वेटली एडजस्ट होबा से कांसेप्ट भी हमको सिखेबो कि ना एजुकेशन. सो थ्रू एजुकेशन वी शुड नो अबाउट द डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट सिचुएशंस एंड टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सो आफ्टर सॉल्विंग एंड आफ्टर नोइंग ऑल these things we have to develop another important quality of our life, that is adjustment. So through education we must learn the proper adjustment capacity, and that is the fifth aim of education. Okay, then the last one is reach present life. Okay, जो आमे प्रेजेंट सिचुएशन ले जो रहउचंती ताकू आमे रिचनेस ता भितरे आनिबा, ताहारी कथा ही चिंता करिबा. तो सेही कथाटा को हमको की रियलाइज करिवो ना प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक द प्रेजेंट लाइफ ऑफ द चाइल्ड इज रिच and abundant for the successful creation of values and maintaining progress. Proper progress को जेमिति maintain करिवो. So these are the basic and important aim of education according to pragmatism. The next one is curriculum. तो आमे एम सेटअप कले तो वर्तमान आमे मीन्स खुजिबा को मीन्स रे गले आमे एजुकेशन बा हमर जो एम जो फिक्स कले से एम रे आमे पहुंचीबू. So the pragmatism prescribes a flexible type of curriculum. जेहेतु हम फास्ट डिस्कशन करचंती, the aim of educations are always flexible. जेहेतु सिचुएशन को नै कि आमे एम फिक्स करिवु तो सही सिचुएशन अनुसार ही करिकुलम फिक्स करा जिवो. Due to that here we found the flexible type of curriculum are there, and it includes all experiences that the child receives in the classroom, on the playground, in the lab, library and various social relationships. Okay, so a knowledge guda, a experiences guda very important for the individuals and for their development. तो बेसिकली को करिकुलम एठी रखा होची ता बाबदरे भी टिके देखिबा. Okay, so according to pragmatism utility is the first creation constitutions. Okay, तो utilitarian values रहिबो करिकुलम प्रिपरेशन बेले. जो कांसेप्ट रे किछि यूटिलिटी थिबो, जो कांसेप्ट को आमे यूज करूथबा हम लाइफ रे, रियल लाइफ सिचुएशन रे, we generally place such type of curriculum in our curricular structure. So the curriculum should be includes the physical training, hygiene, language, history, geography, math and science. For girls, domestic science and home science, and for boys, agriculture should be prescribed. Okay, तो कोन सब्जेक्ट रहिबो ना गर्ल्स मान को पे डोमेस्टिक साइंस रहिबो, होम साइंस रहिबो, बॉयज मान को पे एग्रीकल्चर रहिबो, because these are the very essential or utilitarian concepts for every individuals. Okay, so these are the curriculums which are prescribed by the idealistic philosophy, pragmatist philosophy. The second criteria is the child's natural aptitude, because as we know we all individuals are special in a some sort of concept, जो concept रे कि आमे निजु को special बोली कहउचंती, interest and taste. Therefore curriculum should include reading, writing, counting, drawing, handwork and natural study. So generally we place these subjects in our curriculum structure for the development of innate potentiality of the individuals. Then the third criteria is the child's occupations and activity. तो जो जगह रे जो लोकटी रहउची सेही अनुसार ताकू ऑक्युपेशनल कांसेप्ट बा ऑक्युपेशनल लर्निंग ताकू आमी दबा, जो थ्री कि से निजे ग्रोन तार डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हे परिबो आ से जगह रे एडुकेटली फिट हे परिबो. Therefore the school should include activity which are socialized, free and purposive.
Then fourth criteria are the principles of integration. The curriculum should not be divided into water light compartment. Okay, तो जो कथा से कहूची जे water light compartment रे ताको divided न करी कि आमे गुटे integrated concept रे ताको रखिबा जेमिति कि सबु curriculum सबु subject समस्त को help करूथबे development करिबारे. So these are the basic principles of curriculum constructions, and also these are the curricular structure which are prescribed by pragmatist philosophy. Then come to the next part, that is method of teaching. So method of teaching रे the method of teaching should not be fixed. Same concept आमे आगु discussion already करी के आछन, flexible रहिबो. So that due to that the method of teaching should not be fixed. Method must be useful and related to the interest of the child. They must involve practical work, activities and productive experiences. को बेस रे रहिबो, practical work बेस रे रहिबो, activity बेस रे रहिबो and productive experiences बेस रे रहिबो. So these are the basic purpose or basic process by which we can conduct or we can maintain the curricular structure within our classroom situation or within our educational setup. तो first method रे हमें discussion कले जेमति कि practical work रहिला, activity रहिला और productive experiences रहिबो. Then second रे हमें discussion करिबा pragmatism believe in action and actual participation. जेहेतु action based philosophy आ actual participation ऊपर बहुत importance दिया जाए. तो जोटा learning by doing process रे ही पाठ पढ़ा जीवो जोटा कि pragmatism कहूची. The child in the life situation, this helps child to study solutions intelligently and solve problem absolutely. Intelligently problem को से solve करि परिबो, study करि परिबो. आउ जो actual problem जोटा सेही problem रो जो solution टा अछि सेही problem को से problem रो solution को से find out करि परिबो. Then pragmatism utilizes the project method and experiment method. Project method और experiment method को vastly use करा होतला in teaching process. In short, pragmatism considers the schools as a pattern of social actions and entire emphasis in the child, not to the book and the teacher. Teacher आउ book को सेतेटा importance दिया होतला जति कि child को importance दिया होतला, because that philosophy is basically based on the present situation. और present situation ले हमें कहा को importance दियंती हम educational structure रे नाम student को. So entirely importance or emphasis on provide to the child. All methods which awaken and advise the child are the methods in the pragmatism. सबु method जोठी कि हमें केवल जो एक्टिवाइज जो पिला को हम एक्टिवाइज करूचंती, एक्टिविटी देई कि तांको एंगेज करूचंती, सबु प्रकार जेति कि मेथड रे पिला को एक्टिविटी देई कि एंगेज करा होची, सबु मेथड गुडा एडॉप्टेड होबो कोठी ना pragmatism एजुकेशनल प्रोसेस रे. Okay, so these are the basic methodology which are adopted by pragmatism or pragmatist philosophy. Then teachers and his role. तो এই কনসেপ্ট রে এই ফিলোসফি রে টিচর রোল কোন, টিচর কনসেপ্ট বা টিচর র जो ইম্পর্টেন্স কোন ডিফাইন করা হইছি বা কোন প্রাগমাটিস্ট কনসেপ্ট রে কোন ডিফাইন করা হইছি দেখিবা. সো অ্যাকর্ডিং টু প্রাগমাটিস্ট দ্য টিচার ওয়ার্কস এজ এ ফ্রেন্ড, philosopher and guide to the child, because here we provide the important place in our educational structure to our students. The teachers are the passive persons in our educational process, and they seems as a friend, philosopher and guide for the students. In the educational philosophy of pragmatism, teachers has to set stage and guide students to achieve the goal. तो टीचर कौन करिवो ना स्टेज सेट करिवो आउ तांको गाइड करिवो टू अचीव देयर गोल्स, तांको गोल को अचीव करिया पय तांको गाइड करिवो. Hence teachers in the foreground, the students too in the foreground, both have work actively, समस्ते एक्टिवली वर्क रे पार्टिसिपेट करिवे. एज सच ही नीड टू टू क्वालिटीज, नेमली कोन कोन रहिबो गुटे टीचर पाखरे क्वालिटी. फर्स्ट वन इज कैपेसिटी टू कम इनटू क्लोज कांटेक्ट ऑफ चिल्ड्रन, टू नो देयर इंटरेस्ट. ओके, कारण किए कोन काम करिवो, कहार कोन इंटरेस्ट अछि हम जानिले तो ताको सेही काम असाइन करिवा ना. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूटी ऑफ ए टीचर टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स और आवर स्टूडेंट्स एंड full understanding regarding the conditions and situations of changing society. जो सोसाइटी रहउचंदी, जो प्रोसेस रे हम रहउचंदी, से प्रोसेस केमिति चेंज होउची, को डायरेक्शन ले चेंज होउची, सी डायरेक्शन और से चेंजिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करिवे और से अनुसार गाइड करिवे. दैट इज द अनदर रोल ऑफ टीचर इन pragmatist or pragmatism. Then the last part is pragmatism and discipline. Educational process रे last concept को हमें आसिलु
जो हम डिस्कशन करूँ प्राग्माटिज्म डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट कौन से कहूँ जेहेतु सब किसी तो फिक्स नुहे सब फ्लेक्सिबल तो डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट इज आल्सो फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू प्राग्माटिज्म. Pragmatism advocates the merging of play with work. Okay. पिला खेलिबो आ काम किछि गुटे काम रे एंगेज रही कि निजु गुटे डिसिप्लिन करिवो. So he will develop self confidence, self reliance, cooperation, sympathy and fellow feeling for others. Okay. So if a individual should develop such type of good qualities, then automatically that individual become a disciplined individual. And with the development of these social qualities, he will develop a sense of social discipline and moral obligations towards help and others. Okay. So these are the basic disciplinary concepts which are prescribed by pragmatism philosophy. Thanks to all for this class. Okay. तो आमे आगु को पुनी नुआ क्लास नहीं की आसीबा. Thanks again.